Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. cs504 Software Engineering 1 ग्रैंड क्विज़ेस या मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितने भी एमसीक्यूज पहले मिड टर्म एग्जाम्स में आ चुके हैं आज हम उनको देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. The first question is, by following modern system engineering practices, simulation of reactive system is no longer necessary. ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो इट्स करेक्ट आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होती है वो इंडिकेट सिस्टम रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट्स. Next question is control flow diagrams. Control flow diagrams are needed to model event-driven systems required for all systems used in place of data flow diagrams useful for modeling user interface. So its correct answer is A, needed to model event-driven system. Next question is a change becomes dash because of close presence of data and functions. Localized its correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है a complex system evolves from a dash. A smaller system, medium system, bigger system या none of the given. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए स्मॉलर सिस्टम. अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व्स फ्रॉम अ स्मॉलर सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, क्लोजनेस या ऑल ऑफ द गिवन. तो जो कपलिंग होती है वो मेजर होती है इंडिपेंडेंस का. सो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज इन्वॉल्व्स. इसमें डिबगिंग, एडिंग न्यू फीचर्स, मेकिंग चेंजेस. All these options are correct. So the option number D, it's the correct answer. Next हमारे पास है the hardest single part of building a software system is deciding precisely dash to build. तो इसमें हमें what, how, when या why कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल है. इसमें सूटेबल होता है what. The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. Next हमारे पास है interaction diagrams depicts the dash behavior of the system. Static, dynamic, active या none of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, means dynamic behavior of the system. नेक्स्ट हमारे पास है इन सीक्वेंस डायग्राम्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द मैसेज इज डिनोटेड बाय एन एक्टिवेशन बॉक्स, सिंपल बॉक्स, एरो या नॉन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिवेशन बॉक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं अ पुअरली डिजाइंड इंटरफेस कैन कॉज अ यूजर टू मेक कैटास्ट्रोफिक एरर्स इज वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर GUI. तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर्स इंक्लूड डैश लॉग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट बिजनेस, एनालाइज बिजनेस रिजल्ट्स. इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स. इसमें जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप्स या आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन रिलेशनशिप्स. इनमें से कौन सा करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट फाइंडिंग मेथड. हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग मेथड कौन सा है. हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग. 7 कॉमन फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स जो हमारे पास हैं जो सैम्पलिंग, रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, प्रोटोटाइपिंग, ज्वाइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. ये हमारे पास 7 फैक्ट फाइंडिंग के मेथड्स हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज मोबाइल इज अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच सीन कॉमनली ऑन PDAs. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब इट. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हम उसको कह सकते हैं. ये इसके करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच improve the reusability of codes, makes objects less independent, increase testing time, complicates mapping of a system model to an implementation model.
So its correct answer is A, improves the reusability of codes. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो है most software continues to be a custom built because यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर में से कौन सी नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स में से नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है which of these people would not be likely to part of the FAST team. So D is the correct answer. Senior financial officers are not likely to be part of the FAST team. Next हमारे पास है and state transition can only occur when triggered by an event. इसका करेक्ट आंसर है द इवैल्यूएशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन ट्रिगर्ड बाय अ सेट ऑफ कमिंग इवेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है अ चेंज बिकम्स डैश बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डाटा एंड फंक्शंस. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लोकलाइज इसका आंसर है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. A process which does not take input is called miracle process. यहाँ पे सिर्फ आउटपुट ये जनरेट करता है. प्रोसेस हैज आउटपुट बट नो इनपुट. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा स्टोर नोटेशन इन DFDs प्रेजेंट्स डाटा इनपुट एंड डाटा आउटपुट. ये हमारे पास करेक्ट इसका आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट. इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड एट अ dash stage in the software development process, it will cost much more than if it was fixed at dash stage. अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे जब हमारा पूरा एक प्रोग्राम बन जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा कॉस्ट लेगा बजाय इसके हम उसको अर्ली स्टेज पे ठीक कर लेते, उसको सॉल्व कर लेते उस प्रॉब्लम को. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है लेटर एंड अर्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है once these requirements have been finalized the dash process starts. फिर कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर्स एग्रीगेशंस मींस व्हाट आर माय कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस. तो इसका करेक्ट आंसर ए है कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा डिजाइन एक्चुअली बिगिंस ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर इज इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग mutual communication, early design decisions, reusable abstraction of a system. इनमें से कोई एक या फिर ये सारे. All of the above options are correct. Next हम देखते हैं software architecture is the dash of the components of a program या system, their interrelationships and principles and guidelines governing their design and evaluation over time. तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है कोहेजन इज अबाउट मेकिंग श्योर ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग एंड डज इट वेल. डज 3 2 infinite या 1. So its component does one thing and does it well. Option number D is the correct. Next है following are some statements associated with data flow diagram. Identify the correct statement from among them. तो statement जो B है DFDs are used to represent only functional processing, data stores and data movements between functions. This is the correct answer. Now move to the next. UML means Unified Modeling Language. Analysis modeling focuses on the user model and structural model. Option number D is correct. Next हमारे पास है the data flow diagram must be augmented by descriptive text in order to describe the functional requirements for a software product. तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो इट्स ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ये भी हमने बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द
to use ordinary data flow diagrams to model the functional requirements of real-time systems. तो ये statement हमारे पास false है. Now move to the next. An object or class may further be classified on the basis of behavior-driven attributes, data-driven attributes, responsibility-driven attributes. So इसमें तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम देखते हैं अ पब्लिक इंटरफेसेस प्रोवाइड्स अ वे फॉर डैश विद अदर क्लासेस. Accessibility is the correct answer. Now move to the next. DFD notation contains data store, external agents, process all of the given. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व्स फ्रॉम अ स्मॉलर सिस्टम, मीडियम सिस्टम, बिगर सिस्टम, नॉन ऑफ द गिवन. जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये स्मॉलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है requirement engineering mainly deals with the dash of the system. Definition phase इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं insufficient user involvement leads to dash products unacceptable. इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन डायग्राम्स. इंटरसेक्शन डायग्राम्स का क्या काम नहीं होता. आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज अमंग ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शन नंबर डी. Now move to the next. Collaboration diagrams have basically two type of components. और एक तो होते हैं objects and the second one is messages. Next हमारे पास है the scope description establishes the dash between the system we are developing and everything else in the universe. Boundary इसका आएगा correct answer. Option number A. Next हमारे पास है which one is not a type of message which the sequence diagrams depicts. इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी अपडेट्स. ओके ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मोस्ट critical non-functional requirement of a system to control radiation dosages that are emitted as treatment for cancer. तो इसमें आएगा accuracy. Accuracy it's not sure answer, so you have to check on handouts. Next हमारे पास है given below are some statements associated with data flow diagram. Identify the correct statement from among them. इनमें से कौन सी statement जो है वो correct है about associated data flow diagrams. Context diagram shows the major system process. It's the correct answer. Next हमारे पास है what would be the most suitable architectures to develop a commercial web pages to do business transactions over the internet. So it's client server model. Option number A is the correct answer. Next हमारे पास है the first step in any OOA process model is to build an object relationship model. Option number A. Next है dynamic components of an OOA model are sensitive to timing and event processing. ये हमारे पास correct answer था. Next हम देखते हैं the events occur whenever actor and the OO system exchange information. इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी. ये स्टेटमेंट हमारे पास है तो ये बिल्कुल फॉल्स है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो रिप्रेजेंट्स द मैनर इन विच डाटा एंड कंट्रोल changes each moves through the system is the correct answer. Option number B. Next हमारे पास है which view should be considered first during software requirements analysis. तो इसमें आएगा D implementation view. नेक्स्ट है हमारे पास state transition diagrams is helpful in determining business understandings. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a better design has an objective achieve high cohesion and low coupling. Option number D. Next say the process of defining attributes is called what I know is the correct answer.
Next, which of the following is not an objective for building an analysis model? तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें, डेवलप एन एब्रीवेटेड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द आउटपुट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसेस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर कोड, सॉफ्टवेयर या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू ऑफ अ डाटा warehouse but not a typical database? So its correct answer is currency and correctness of information. Next है हमारे पास, identifying system features include log important information, conduct business, analyze business results. हम already पढ़ चुके हैं, so all of the above is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास है, द टू मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज आर रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट specification. They are also called requirement definition and dash functional specification. Option number A, functional specification is the correct answer. Next देखते हैं, project dash defines the concept and range of the proposed solution and limitations, identifying certain capabilities that a product will not include. So its correct answer is scope, option number A. Next हमारे पास है, Windows Mobile is a popular mobile operating system which seen commonly in PDAs. Which of the following category pairs best describe it? So its correct answer is application software and embedded software. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर हमने बाकी भी पढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।